Okay, welcome to DCS Learning. So we were going to discuss or solve the previous year paper of NCET, the general test section we will discuss in this video. Okay, which contains basically 25 questions. Okay, we will solve and we will see a little bit inside of the questions कि हम लोग उसको कैसे approach कर सकते हैं, हम लोग उसको कैसे solve कर सकते हैं. So here we go. The first question. So the first question is about blood relation. Okay. P, Q, R, S, T, and U are six members of family in which there are two married couples. So we know here that there are two married couple. Okay, there are two married couple. दो married couple है यहाँ पे. T a doctor. Okay, we don't know the gender till now. T is a doctor. Is married to a teacher. Is married to a teacher. Okay, who is mother of R and U? Who is mother of R and U? So if the wife of T is a doctor. Okay, so T will be a male because the teacher is a mother of someone. So mother means wife of T. Okay, so we don't know who is she. We will see. Let's see. Q, the lawyer, is married to P, and P has one son and one grandson. So only the above generation of T can have a son and a grandson. So P, Q is the lawyer, is married to P. Okay, we don't know again the gender of Q and P. So S is the teacher. Okay, of the two married ladies, one is a housewife. So of the two married ladies, one is housewife. So Q is the lawyer and P is the housewife. Okay, there is also one student and male pilot in the family. So out of R and U, whoever will be the male will be the pilot. Okay, so grandson. Question क्या पूछा है कि which of the following is true about the grandson? So grandson will be male. Okay, and male will be the pilot. Okay, so which of the following is true about the grandson of the family? Will be option 3, pilot. Clear? This is a blood relation का question है. ठीक है, blood relation या फिर established relations का question है, and this is a question from passage form. Okay, between this I want to tell कि हम लोग जनरल टेस्ट, रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका तीन मस्ट और या फिर कंपलसरी डोमेन है, उसके लिए वी वर टीचिंग इन द डीसीएस लर्निंग. आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहां पे आप कोर्स को बाय कर सकते हैं. उसके साथ साथ आप डोमेन भी पढ़ सकते हैं हम लोग से, पीसीएमबी एंड द आर्ट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट. दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एज. 20 years ago, a man was 3 times as old as his son. Okay, the question says 20 years ago, the okay 20 years ago, a man was 3 times as old as his son. So let's take man is X and his son is Y. Is Y. Okay, so we can write ki X minus 20 is equal to Y minus 20, but a man was 3 times as old as his son. So we can write like this. Okay. Next, x minus 20 equal to 3 of y minus 20. Now the man is twice as old as his son. That means I can write ki present condition. In present condition, we can write ki x equal to 2y. So by these two equations, if we put the value of x in this equation, then we can solve it. So x minus 20 equal to 3y minus 60. Got it? So x equal to 2y, putting the value of x equal to 2y in this equation, 2y minus 20 equal to 3y minus 60. So 2y minus 3y equal to minus 60 plus 20 equal to minus y equal to minus 40 or y equal to 40, cancelling negative side from both sides. So y equal to 40. If y equal to 40, okay, so x equal to how much? 2y, that is 40 into 2. That means 80, and y equal to 40. So the sum of the present ages of his man and thus his son is 40 plus 80 is 120. So option 2 is correct. Clear? Okay. This is a problem of age problem. Okay. Which comes under again arithmetic reasoning. Okay. Next question.
डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ये आपके पास स्टेटमेंट है, दिस इज कंक्लूजन। ये आपका कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म। Okay, so we will draw the Venn diagram first. No A is B, so we can draw no A is B. Let me take another color. No A is B. Some B is C. Some B is C. Okay. At least some C or D. So at least is a secondary keyword. Okay. We can happily ignore that. Okay. So some C or D. Some C or D. Got it? Okay. Now some A or D. Some A or D. Some A के साथ A and D have no relation. Have no relation, and we know by the note that A and D, if they don't have relation or restriction, okay, then without possibility, that is, this is a definite conclusion. This is a definite conclusion. So definite conclusion when there is no possibility, okay, and if they have no relation, then that will be false. So this is false. Okay, some B or D is a possibility. Again, B and D don't have any relation. B and D don't have any relation. But whenever there is a possibility, that is under the circumstances of indefinite conclusion, okay, then it is true. Some B or D is a possibility is true. So option 2 will be correct. That means only two conclusion follows. Clear? Okay. Next question. Which of the following articles of the Constitution of India has provision for the presidents to proclaim emergency? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो दिस विल बी आर्टिकल 352. ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, in a certain code language, problem is written as PSQYNFM. Okay, so let me write first. It is problem. ठीक है, it is written as PSQYNFM. How is builder written in that code language? Builder कैसे written होगी? ठीक है, let's see. Builder कैसे written होगी? तो what is the pattern here going on? So there are 7 letters. Okay, we will divide 3, 3 and 1. Okay, then we will see what is happening. Okay, problem is written is like this. So builder को भी हम लोग यहाँ पे तोड़ देते. ठीक है. Now what is happening? See, P Q. So P plus 1 equal to Q and R plus 1 equal to S and O plus 1 equal to P. Similarly, L plus 1 equal to M, E plus 1 equal to F and M plus 1 equal to N. So P, Q, R, S. So it is like this. Okay, it is again like this. Okay. So similarly, B, C, U, V, I, J. Okay, D, E, P, Q, R, S, E, F. Okay, so J, B, C, S, F, E. Got it? So JBC and SFE is only in the option 4. So here is a little bit confusing regarding the question. What is that? Ki the B is okay. Let me write A, B, and this is Z and Y. So basically Y plus 1, plus 2, and plus 3. So Y plus 3 equal to B. Okay, or we can say that B minus 3 equal to Y. But if we go L minus 3, then that will be something else than O. Okay, but here we have option regarding O, so we will write this. Okay, because no other option comes close. Next question. A person travels 245 kilometers in 6 hours in 2 stages. So this is a speed and distance question. Okay, in the first part of the journey, he travels by bus at the speed of 40 kilometers per hour. In the second part of journey, he travels by the train at the speed of 50 kilometers per hour. How much distance does he travel by the train? Okay, for example, okay, let me start. For example, he traveled D1 and D2. Okay, D1 is by bus. D1 ने उसने बस से ट्रेवल किया और D2 जो है वो ट्रेन से ट्रेवल किया. D1 प्लस D2, ओके, ये इक्वल टू कितना है?
245, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 245 है ना। देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि d1 इक्वल टू 245 माइनस d2, वी कैन राइट इट d1 इक्वल टू 245 माइनस d2। ओके, नाउ d1 ये स्पीड कितना है, मतलब कि टाइम कितना लिया है। d1 जितना भी डिस्टेंस है ना, वो कितना स्पीड से गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, प्लस इसको हम लोग करते हैं कि d2 कितना स्पीड से गया है 50, अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड। ये टोटल टाइम कितना है 6 घंटा, 6 आवर्स। ठीक है, बाय सॉल्विंग इट व्हाट कैन वी डू, 200, ओके, दिस विल बी 5d1 plus this will be what, 4d2, got it, equal to this is 6 hours. So I can write 5d1 plus 4d2 equal to 1200 hours. ठीक है, but we can write what, d1 as 245 minus d2. So 5 upon, or 5 in 245 minus d2 plus 4d2 equal to 1200. Okay, so this will be like 1225 minus 5d2 plus 4d2 equal to 1200. So minus d2 equal to 1200 minus 1225. So minus d2 will be minus 25. So d2 will be 25. Okay, so if d2 is 25, d2 is 25, so d1 will be how much, 245 minus d2, that means 245 minus 25, that means 220 kilometer. How much distance does it travel by train? d2 is our train, so d2 will be 25 kilometer. Option 1 clear है, clear है। चलिए next, let's see question. The weight of two person A and B are in the ratio of 3:5. This is a question of ratio proportion and along with percentage, है ना। मैं क्लास में अभी भी जब भी पढ़ाता हूँ बेसिक्स परसेंटेज एंड रेशियो के बारे में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेशियो और परसेंटेज ये दो बहुत इंटरमिक्स टाइप का ये है। रेशियो यूज करते टाइम आपको परसेंटेज की क्वेश्चन आ सकती है, परसेंटेज का क्वेश्चन यूज करते टाइम आपको रेशियो की हेल्प लेनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इनका बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी okay, the weight of two persons A and B are in the ratio of 3:5. A's weight increased by 20%. Okay, so and total weight of A and B together becomes 80. So 3:5 is A and B का weight का ratio. So we can take as 3x of A and B is 5x and total is 8x. Can we? Can we? We can. Now A's weight increases by how much? 20%. So we can write A का weight, A prime का weight मैं लिख सकता हूँ 3x into 120 by 100. I can write, got it, 3x into 120 by 100 because 20% से increase हुआ है, तो 100 था तो वो 120 हो चुका है। नेक्स्ट इज टोटल 8x जो है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 25% से। तो 8x into 25 पर या फिर 125 by 100, दिस विल गिव यू द टोटल, this will give you the total, and total weight of A and B together becomes 80 kg with a total increase by 25%. So when 8x increases by 25%, this becomes 80. This becomes 80. So I can write 8x into 125 equal to 80 into 100. Clear? Then 8x equal to 80 into 100 by 125 and by x equal to 80 into 100 by 125 into 8. Got it? So this will be like this: 8, 10, okay, 5, 25, 5, 2, 25, 4. So x equal to 8. So here x is equal to 8. So I can write the age of them respectively. A is 24 and B is how much? 40. Got it? So now if 24 increases by 20%, so what will be that? If 24 increases by 20%, what will be like that? So 24 into 120 divided by 100, that will be how much? 24
into 120. So this will be 28.8. Okay, but they become 80. So if I say 80 minus 28.8, that will be how much? 51.2. So 40 becomes 51.2. So he increases 11.2 kg. 11.2 kg is how much percentage of 40? How much percentage of 40? You can do this. 11.2 into 100 divided by 40. Done. Okay. 5. This is 5.6. So 560, 5 3 5 5 25 20. So this will be 28%. So option 3 will be correct. ओके गॉट इट। पहले आपको ये देखना है कि ए और बी का रेशियो क्या है। ठीक है, ए और बी का अपने रेशियो से आपने 3x और 5x ये कर ली। ठीक है, आपको बोला गया है कि उनका टोटल एज जब 25% इंक्रीज होता है तो टोटल एज बन जाता है 80। टोटल एज बन जाता है 80। तो वहां से आपने एक्स का वैल्यू निकाला, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद आपने ए और बी का सेपरेट एज निकाल दिया। ए और बी का सेपरेट एज निकालने के बाद ए का वैल्यू अगर 20% इंक्रीज होगा तो 28.8 होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना होने से एक्चुअली में उनका टोटल इंक्रीज 25% होता है, वो आपको निकालना। सो दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? दिस इज संभाजी नगर। ठीक है, या फिर छत्रपति संभाजी नगर, वट एवर यू राइट। तो दिस विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, so this is also a question of GK. Okay, so these are the famous author and these are the famous book written by them. So okay, so Kabir Das, you know, wrote Bijak. ठीक है ना? Gita Gobind is written by Jaydev. Gita Gobind is written by Jaydev. Got it? Rakshan wrote Prem Batika and the rest. ठीक है, तो द ऑप्शन विल बी A4, B1, ओके, C2 एंड D3। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर दिस यू हैव टू go through a little bit static GK, a little bit pure general knowledge. Next, we have again a blood relation का question. Abha is daughter of my mother's brother Ankit. Charu is granddaughter of my mother. Let see. Abha is daughter of my mother, so this is me. I don't know, gender of mine is not specified here. यहाँ पे जो पर्सन फर्स्ट पर्सन है उसकी जेंडर यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया। ओके, माई मदर्स ब्रदर इज अंकित, दिस इज फीमेल। I denote circle as female and square as male. Got it? Okay, so my mother's brother is Ankit, okay, whose daughter is Abha, Clear है? Charu is granddaughter of my mother. So Charu is granddaughter of my mother. So Charu can be my daughter. Charu can be my brother's daughter. Charu can be my sister's daughter. Whatever. Okay. Okay. These are the possible. These are the possible event. Okay. Okay. So now this Abha is cousin of mine, cousin sister of mine. This Abha is cousin sister of mine. So my daughter or the second generation, my brother's daughter or my sister's daughter will call him as what? Aunt. Option 2. Clear? Clear? Next. Who is authored Great Soul Mahatma Gandhi and his struggle with India? This is Joseph Lillywhite. ठीक है? Next. Which Veda contains Gayatri Mantra? This is Rig Veda. ठीक है? Okay. Next, the work and days का question है, A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work 4 days before its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days the work completed? Okay. Let
assume कि the work has been completed, the work was completed in X days. ठीक है ना, in X days. Okay, A left the work 4 days before its completion. ठीक है, तो A worked for how much day? X minus 4, because complete होने से 4 दिन पहले उसने निकल दिया. B also left the work 2 days after A left. Okay, 2 days after A left, that means X minus 4 minus 2, that means X minus 2. B ने काम किया है X minus 2. In how many days? अच्छा, C ने पूरा काम किया है. C worked for full. Okay, in how many days the work was completed? Okay, let's see. So A कितना काम करता है एक दिन में? A complete a work in 10 days. Okay, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/10 पार्ट. ठीक है, सिमिलरली B कितना काम करता है? 1/12. एंड सिमिलरली C कितना काम करता है? 1/50. Got it? So in how many days the work was completed? Let's see. So total work is 1, है ना? So I can write X minus 4. This is a day worked by A. X minus 4 by 10. Clear? Or into 1/10 plus X minus 2 into 1/12 plus X by 15, or X into 1 minus 1/15. Okay, this is equal to 1. This is equal to 1. Let's take the LCM of 10, 12 and 15. How much? That will be 60. You all know how to do LCM. This is 60. Okay, let's say this is 6. 6x minus 24 I am doing directly. Okay, plus 2x, sorry, 5. 5x minus 10 plus this will be 4x equal to 1. Okay, I can write directly that this is equal to 60, है ना? This equal to 60. Got it? Now see, 6x plus 5x plus 14x equal to how much? 6x plus 4x plus 5x, for example. ठीक है, equal to 60 plus 10 plus 24. This minus sign will be coming here. So 14x equal to how much? 94. Okay, x equal to, sorry, this is 15x. Sorry. This is 15x. This will be 15x. ठीक है ना? This is 15x equal to 94. So x equal to 94 by 15. That will be 6 upon 4 by 15, which is option 3. Clear? No issue. ठीक है? Next. These are the mountain pass and situated in which state? Okay, so Mana Pass is located at Uttarakhand. ठीक है, Mana Pass is located at Uttarakhand. So A will be 4. A will be 4. So option 1 cannot be the answer. Okay, Nathula Pass is located at Sikkim. Nathula Pass is located at Sikkim. So B will be what? B will be 1. B will be 1. So option 2 is also wrong. C, Jojila Pass, you all know. Jojila Pass is located at Ladakh. है ना? You may have seen many documentaries or many, YouTube videos, those who make travel videos. So Jojila Pass is located at Ladakh. So C will be 2. So option 3 will be correct. ठीक है? Automatically D is 3. Sipkila Pass is located in Himachal Pradesh. ठीक है? Next. Who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President. ठीक है? Option 2. उपराष्ट्रपति. ठीक है? Next. In an examination, average marks by a student per subject was 65. If he had obtained 20 more marks in English and 2 more marks in maths. Okay, fine. So let's see. Average marks obtained by a student per subject was 65. Let's say, because his average marks would have been 67. How many subjects? So let's assume total subjects were X. Total subjects were X. ठीक है, तो
हिज टोटल नंबर वुड बी, टोटल नंबर कितना होगा 65 into x, ठीक है। If he had obtained 20 more marks in English and 2 more marks in maths, okay, तो 65x plus 20 plus 2, okay, this, if this had been divided by x, okay, then it would have been 67. Got it? Got it? 65x प्लस अगर दो सब्जेक्ट में 20 और 2 करके बढ़ता, मतलब कि टोटल 22 नंबर अगर बढ़ता, तो कितना होता है एवरेज, कितना होता है 67। तो सब्जेक्ट तो आपके उतने ही है, बस इंग्लिश में और इसमें बढ़ रहा है। तो 65x प्लस 22 इक्वल टू 67x हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 65x प्लस 22 इक्वल टू 67x। तो 22 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 11। तो टोटल सब्जेक्ट्स वेर 11, टोटल सब्जेक्ट्स वेर 11, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पाइप एंड सिस्टम। Two pipes A and B can fill a cistern in 10 minutes and 20 minutes respectively, ठीक है। A and B can fill the cistern in 10 minutes and 20 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full cistern in 5 minutes, okay। A and B are kept open for 4 minutes, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A and B are kept open for 4 minutes in the beginning and then C is also open। तो पहला 4 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ A और B काम करता है, उसके बाद C को भी खोला जाता है। तो इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टीड, ठीक है, टोटल कितने टाइम में सिस्टर्न एम्प्टी होगा। ओके लेट्स सी। तो ए काम करता है कितना, ए काम करता है अगर 10 मिनट में ये पूरा का पूरा खाली कर देता है, ओके, होल कम, तो 1 मिनट में ये कितना काम करता है 1/10। सिमिलरली बी कितना करता है 1/20। सिमिलरली सी कितना करता है 1/5। ओके नाउ लेट्स सी। अगर मैं बोलूं कि 4 मिनट तक, मतलब कि ए और बी जब एक साथ काम करते हैं, ए और बी, तो वो लोग कितना करते हैं 1/10 प्लस 1/20। लेकिन ये 4 मिनट तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1/20, दैट इज 4 इंटू 3/20, 4 इंटू 3/20 विच इज 3/5, ठीक है। ये दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं 4 मिनट के लिए, ठीक है। अभी ये पार्ट कितना हो रहा है 4 मिनट में ये फुल हो रहा है, ठीक है। अभी पार्ट एम्प्टीड इन, हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट में कितना एम्प्टी हो सकता है, ठीक है। तो सी अकेला 1/5 एम्प्टी कर रहा है और ये लोग भर रहा है, तो 1/10 प्लस अगेन 1/20 which is we know 3/20। तो 1 minus 5 minus 3/20, 1/5 minus 3/20 will be how much 4 minus 3/20, that is 1/20, ठीक है। अभी हमको पता है कि टोटल हमको खाली कितना करना है 3/5, टोटल हमको खाली करना है 3/5, ओके। तो अगर 1/20 1/20 पार्ट अगर मेरा टाइम लग रहा है 1 मिनट, ठीक है, तो यू डू द यूनिटरी मेथड, 1/20 is emptied in 1 minute, then 1 is 1/1 into 20 divided by, okay, and 3/4 will be 1/1 into 20 into 3/4 to 4 5, it will be emptied in 15 minutes when the ABC all the pipes will be open, okay, this is also ABC all the pipes are open, then it will take 15 minutes when all A, B and C are opened, ठीक है, clear। next question, the Indian parliament cannot legislate on a subject of the state unless the president of India directs to do so. Option B, the Rajya Sabha passes a resolution that it is necessary to do so in a national interest. Option C, the Speaker of Vidhan Sabha certifies that the legislation is necessary. Or option D, there is a national emergency. So this could be done under the two circumstances. First is the Rajya Sabha passes a resolution that it is necessary to do so in national interest, and the fourth there is national emergency. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 B and D. Next, what is the day of the week on 17 May 1707? Okay, so we will first try to find how much odd day are there in 1700. If you don't know what is the odd day and what is, so you can see the calendar classes of ours, और again मैंने जैसे बोला कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस जहाँ पे आप लोग को ये सब कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है। तो odd day basically the day which is the remainder after dividing by 7, okay, the remainder which we get by dividing any number by 7,
Okay, this is the odd day. So in 1700, how many odd days? In 1600, there are 0 odd days. But in first 100 years, there will be first 5 odd days. Okay, so up to 1700, there are 5 odd days. Next, in 67 years, okay, because up to going 1777, 17 May, we have to take the full year 1776. Okay, so 17 we have taken, 76 here. So 1776 year, there will be 19 leap year. Okay, so total odd days will be 76 plus 19, that is 95 divided by 7 will be um, 4. 730 is 19, 4. So 4 and plus 5 equal to 9 odd days up to 1776. Okay, next we will see January, February, March, April, May. मई का 17 दिन, जनवरी 3, 0, 3, 2. Got it? Got it? Okay. Let's see. 3 plus 3, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 17, 25. 25 divided by 7 gives you how much? 7, 3 is 21. So this gives you 4. Okay. So you will add 5 plus 4, which is equal to 14. Sorry. 5 plus 5 plus 4 nahi, 5 plus 4 plus 4. 5 plus 4 plus 4, that will give you 13. So 13 divided by 7 will give you 6. Okay, so 6 is which day? 6 is your Saturday. Okay, we code as Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. We code as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, or it is 7. Okay, next. The simple interest on a certain sum of money for 3 years at 8% per annum is half of the compound interest on 60,000 for 2 years at 10%. Okay, so we have our principal equal to 60,000. Got it? We have t equal to 2, that is time equal to 2, and r equal to 10. Okay, so we will compound it. So compound interest equal to p into 1 plus r to the power n minus p. We will get the interest only. Okay, so 60,000 1 plus 10 to the power 2 minus p. ठीक है, दिस इज 10 by 100. सॉरी, ठीक है, 10% पर है ना, दैट इज 10 by 100, r by 100. तो दिस विल बी 60,000 1 plus 0.10 to the power minus 1. ठीक है, क्योंकि हम लोग ने 60,000 को ले लिया है बाहर, तो दिस विल बी 1. ओके, 60,000 का हम लोग अगर कॉमन ले लिए, पी को अगर आप कॉमन ले रहे तो फिर यहाँ पे -1 रह जाता है. ठीक है, तो अगेन 60,000, तो ये कितना हो जाता है 1.1, विच जिसका स्क्वायर कितना होता है 1.21 -1, तो कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 0.21 विच इज 12,600. ये इंटरेस्ट होता है, बट इसका हाफ है. ओके, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इसका हाफ जनरेट करता है. तो 1200 एंड 600 इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,300. ठीक है, तो हम लोग के पास वी नो पी आर टी बाई 100 इक्वल टू 6300. ओके, तो पी आपका कितना है? पी आपको ढूंढना है 8 आपका पता है इंटू 3 इक्वल टू 6300. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? P इक्वल टू 6300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24. ठीक है, दिस विल गिव यू व्हाट, हाउ मच? 26,250 रुपीज. ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो. 4, 6, 4, 25, 6. ठीक है, ये होगा. ओके, उसके बाद मल्टीप्लाइंग 1050 इंटू 25 विल बी 26,250 रुपीज. क्लियर? क्लियर? So option 4 will be the answer. Next, Aman got 25% of the maximum marks in examination. ये भी equation based exam है.
क्वेश्चन है, अमन गॉट 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, फाइन. हाउएवर पवन हु टुक द सेम एग्जामिनेशन गॉट 45% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड गॉट 15 मार्क्स. ठीक है, तो लेट द टोटल मार्क्स बी हाउ मच, x. ठीक है, देन 25% ऑफ x, ये इसको 10 नंबर कम मिले थे तो +10 विल बी द पासिंग मार्क्स. ओके, एंड 45% ऑफ x, इसको 15 मार्क्स ज्यादा मिले थे, -15 इक्वल टू p. ठीक है, ये अमन का नंबर है, ये पवन का नंबर है, और ये दोनों p इक्वल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 25% ऑफ x +10 इक्वल टू 45% ऑफ x -15. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% ऑफ x माइनस 45% ऑफ x इक्वल टू -15 -10, तो 20% ऑफ x इक्वल टू -25. ठीक है, 25% ऑफ x इक्वल टू -25. सॉरी, इधर भी माइनस हो जाएगा, -20% होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 20% ऑफ x इक्वल टू, तो 20/100 इंटू x इक्वल टू 25. x इक्वल टू हाउ मच, 25 इंटू 100 by 20, 25. तो टोटल मार्क्स इज 125, x इक्वल टू 125. ये आपको पता चल गया व्हाट इज द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो टोटल मार्क्स अगर 125 था तो पासिंग मार्क्स कितना था, किसी का भी ऐड कर लो, 25% ऑफ 125 प्लस 10, ये आपको कितना देगा, 25 इंटू 125 बाई 100 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, 25/4, ये कितना देगा, 31.25 प्लस 10 विल बी 41.25. दैट मीन्स ऑप्शन ए. ठीक है, और ऑप्शन 1. व्हाट इट नेक्स्ट, द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी, यू नो. ठीक है, सिस्मोग्राफ से हम लोग अर्थक्वेक का ये मेजर करते हैं. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का है बट थोड़ा ट्रिकी है. हाउ, बोला है एम इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस, Q is to the north of S, P is 4 meter away from Q, K is 2 meter to the north of P. Okay, let's draw the diagram. How it will be? M is 8 meter to the east of S. Okay, M is 8 meter to the east of S. So this is M, this is S, 8 meter to the east. ठीक है. Q is to the north of S. Q is to the north of S. Okay, but P is 4 meter away from Q. अब I don't know कि Q और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, I don't know. And Q के 4 मीटर कौन से तरफ है, P यहाँ पे हो सकता है, P यहाँ पे हो सकता है, P यहाँ पे भी हो सकता है. K is 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ P. अब आई डोंट नो, K is 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ P. ओके, तो K आपका यहाँ पे भी हो सकता है, K आपका यहाँ पे भी हो सकता है, K आपका यहाँ पे भी हो सकता है, आई डोंट नो. ठीक है, अभी क्या बोला है, और एक सिचुएशन देखते हैं. K is 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ J. दिस इज J एंड दिस इज K. ठीक है, Q is 6 मीटर टू द साउथ ऑफ K. Q is 6 मीटर टू द साउथ ऑफ K. M is to the southeast of K. So this is east, this is south. ठीक है, तो M is to the southeast of K, sorry Q. That means यहाँ पे M है. तो choose the correct answer from the given option below. अब बोला क्या कि what is the direction of K with respect to M. यहाँ पे K का डायरेक्शन M के रेस्पेक्ट में मुझे नहीं पता चल रहा है. अगर यहाँ पे जैसे कि Q अगर यहाँ पे है, ठीक है, देन ऑल्सो आप एक चीज देखिए. ठीक है, ये प्रॉपर साउथ में भी हो सकता है, अब वेस्ट साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट साउथ में भी हो सकता है, बट कितना है वो पता हम लोग को नहीं चल रहा है. बट यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि दिस विल बी श्योरली टू द साउथ ईस्ट. ठीक है, दिस इज श्योर साउथ ईस्ट. क्लियर है? ओके ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाटा in statement 2 alone is sufficient to answer the question. Okay okay, next, क्योंकि पहला में बहुत सारी चीजें अननोन थे इसलिए हम लोग वहां पे निकाल नहीं सकते. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1965. ओके, मिस्टर गोचोक टोंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर वाज अवार्डेड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2003. हाँ, ये दोनों ही सही है. ठीक है, ये बोथ आर ट्रू. तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू. ऑप्शन 1.
नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये फिगर में कितने ट्रायंगल्स है, ठीक है। दिस इज अ काउंटिंग फिगर क्वेश्चन। हम लोग पूरे प्रोसेस से चलेंगे। पहले इसको नेमिंग कर लेंगे, ए बी सी, दिस इज डी, ठीक है। दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एफ। ओके, दिस इज एफ। अभी जो ट्रायंगल मैं बता रहा हूं, देखो ए बी ई, ठीक है। ऊपर बनेंगे आपके 4 ट्रायंगल, उसके पहले नाम लिख लो, ए बी ई, ए ई एफ, ए ई एफ, ए एफ जी एंड ए डी जी, ए डी जी। ये 4 हो गए। इसके चारों के नीचे क्या होगा, सी बी ई, ठीक है, सी ई एफ, बस एक की जगह पे बैठा जाओ, सी एफ जी एंड सी डी जी। तो यहाँ पे कितने हो गए, 8, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ए बी एफ, ये पूरा का पूरा, मतलब कि ये पॉइंट को छोड़ के ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बनेगा। तो सिमिलरली ए बी एफ जब बनेगा तो सी बी एफ भी बनेगा, सी बी एफ भी बनेगा। सिमिलरली ए डी एफ बनेगा, वैसे ही सी डी एफ भी बनेगा, ठीक है। ए ई डी बनेगा, ए ई डी बनेगा, वैसे ही सी ई डी बनेगा, वैसे ही ए जी बी बनेगा, तो यहाँ पे सी जी बी भी बनेगा। तो यहाँ पे भी 8 हो गया। तो 8 + 8 = कितना हो गया, 16। बाकी आप यहाँ पे देखिए, ए एफ जी, ठीक है, ए एफ जी, ये एक ट्रायंगल है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एक बनेगा ए ई जी और एक बनेगा सी ई जी, ये एक बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्या बन सकता है, सिर्फ ए ई सी को लेके ए ई सी एक बनेगा, और यहाँ पे उसके बाद बनेगा सी जी ए या फिर ए जी सी, ए जी सी, ठीक है। तो 16 और 4 20 हो गया। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा जो बनेगा, ए बी सी और ए बी सी और ए डी सी, ठीक है, ये बन गया हाफ हाफ, और ये तरफ से एक हाफ बनेगा, ए डी बी, ओके, एंड बी सी डी, मतलब कि ये बड़ा वाला जो हाफ हाफ, ठीक है, मतलब कि एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 4 20 और 4 24, 24 टोटल, ठीक है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ आपका खत्म हो जाता है ये 25 क्वेश्चन। ओके, 28 क्वेश्चन विल बी देयर। हम लोग ने देखा कि आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एज प्रॉब्लम, एवरेज, ये सब क्वांट के चैप्टर से है। काउंटिंग फिगर, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सारे रीजनिंग के चैप्टर्स भी है, ठीक है। तो रीजनिंग और क्वांट दोनों चैप्टर से पढ़ा, मतलब कि क्वेश्चन सारा है, एंड इवन फ्रॉम समथिंग जनरल नॉलेज, या फिर जो जनरल साइंस होता है, ठीक है। जैसे कि सिस्मोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था, दैट इज फ्रॉम जनरल साइंस। तो आपको ये सारी चीजें, जनरल टेस्ट जो है, इसके अंडर आता है, और इसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं इन द लाइव क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिलेगा आपको, उसको कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स को ले सकते हैं। थैंक यू।